everyone. How are you all? Hope you all are doing good now, bache. And my voice is clear to everyone, right? Okay, great. Yes, bacha party. So, as we have seen in our previous class, okay, क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चे हम लोग हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर? कल वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कितने टाइप्स की डायरेक्शंस होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस वी हैव. एज वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव जनरली four types of main directions, four types of cardinal directions, and total number of directions become the 8. Okay, four is of main and four is of cardinal. And later in this class we were discussing about what, about the shadow concept. Okay, like at the time of sunrise and at the time of sunset, like where will be the shadow begin if you are in front of the light, from the east side, from the west side, like this we guys were discussing yesterday. And later onwards we have discussed about the direction, sorry, about the degree program. Okay, about the degree program, like let's suppose if you are in the middle, if you are in the right side or left side. So that was actually not properly explained yesterday, so that I'm going to explain today onwards as well, so that we can proceed to this class very easily or very. Okay, so just be with me and I'll be explaining you everything accordingly. Okay guys. Okay, so now just the thing would like to explain you. It's a degree program, you can say. Okay, degree. What we are talking about? We are talking about the degree, guys. Okay, so how this degree programs actually works? Okay, how this degree program actually works? So for that, we just simply need to draw a circle. Okay, for this we need to simply draw a circle like this. Okay, for this we need to simply draw a circle like this. Okay, so we need to be assume that you are in the center of the circle. You are in the center of the circle. Simply the thing you need to assume that you are in the center of the circle. Okay, and as it's completely 360 degree. Okay, so here it's going to be the 0 degree. Okay, fine. And here it's going to be the 45 degree. Here it's gonna be the 90 degree, am I right? Okay, here it's gonna be the 90 degree, and then after it's going to be the 135 degree. Got it? And 135, then here it's going to be the 180 degree. Getting my point? And after completion of this 180 degree, it is going to be the 2 to 5 degree. And after the 2 to 5, it's going to be the 270, right? Okay, and after the 270, it's gonna be the 315 degree. And here our complete angles become completed, become the 360 degree. Getting my point, guys? Okay, so here it becomes the complete 360 degree. Okay, so what I just wanted to explain you in all these now, let's suppose, okay, let's suppose the first degree program we are discussing about the clockwise. The first degree program which we are discussing about the clockwise program, guys. What is the meaning of clockwise program here? It means that, let's suppose you are in the center. Okay, you are in the center, and let's suppose examiner gives you a person is in the north side. Okay, east west, obviously the north is upside. A person is in the north side and moving towards the 45 degree. Okay, let's suppose examiner is giving you a question in which is asking that you are in the center. Okay, facing towards the north direction, and you are moving towards the 45 degree. You are moving towards the 45 degree. Getting my point? What I just wanted to explain you. You are in the center facing towards the north, and you are turning towards the 45 degree. And now the question becomes, in which direction you are currently. Okay, in which direction you are currently.
So as you know, east, west, north, south. So this has become the northeast direction. So your answer would be sir, or this particular boy which is facing towards the north, turning towards the 45 degree. So currently he is in the northeast direction. Currently he is in the northeast direction. Getting my point? What I just wanted to explain you all. You are in the northeast direction. Okay, till here it's clear to everyone? Just kindly mention in the comment section so that I can proceed further. Okay, and don't forget that we are discussing about the clockwise. It means we always need to move from up to down, or you can say the left to right. Okay, like this we only need to move if you are turning towards the clockwise direction. If you are turning towards the clockwise direction, getting my point? Just keep this keep my words in your mind now. Okay, I request to everyone to kindly write it down in the comments. Okay, if it's not clear, or if it's clear, then it's fine. Then we'll be discussing towards the anti-clockwise direction. Okay, just do it fast. Mention in the comments. I'm waiting for you everyone's comment now. Okay, okay, that's fine. So now the next we guys are discussing about the next circle. Okay, we're discussing about the next circle. Getting my point? Again you are in the center, but now the thing is what? Now here everything is going to be changed. Everything is going to be changed. How does it happen? Obviously the zero is going to be on their same place. Okay, the zero is going to be on their same place. Getting my point, guys? Zero is going to be on their same place, obviously, but the 45-degree which was coming here will be come to this direction. Okay, the 90 which was coming here, the 90 will be coming to this direction, and after the 90, the 135 will be coming to this direction. The 130 will remain same on their place. Okay, and this will become the 225-degree, and this will become the 270-degree. This will become the 315-degree, and this will become the 360-degree. Okay, getting my point, guys? So this is how it's going to be happen. But now the thing is, everything is like coming towards from the left hand side. Everything is coming from the left hand side. So obviously it's not a clockwise. It becomes the anti-clockwise. It becomes the anti-clockwise, guys. Okay, it becomes the anti-clockwise. Okay, it becomes the anti-clockwise. Understood, guys? It becomes the anti-clockwise. Yes, not anti, it's anti. Okay, yeah, obviously when we are in the funny mood now, or we call it as a anti-clockwise, but it's not anti, it's anti-clockwise. Okay, so currently we are serious towards the studies, so we'll not do any kind of joke right now. Okay, everybody just kindly note it down. Okay, and just let me know, is it clear to you or not? Okay, if it's not clear, then also you can ask me any question, and if it's clear, then it's totally fine. Okay, great, guys. चलिए ठीक है, proceed करते हैं हम लोग आगे towards the examples. Okay, so today we're gonna solve some kind of examples so that you'll be able to understand this chapter more easily. Getting my point? So the first question I have for you is, Raju is standing facing north. Okay, Raju is standing facing north. Raju is standing facing north. Okay, he goes 30 meter ahead. He goes 30-meter ahead. Getting my point, guys? He goes 30-meter ahead and turns left. Okay, and turns left. Okay,
and goes for 15 meter. Goes for 15 meter. Okay, bache. Now he turns right. Okay, now he turns right. Okay, now he turns right and goes for 50 meter and goes for 50 meter. Now he turns right and goes for 50 meter. Okay, and finally turns to his right, and finally turns to his right. Okay, and walk. Now the question is, in which direction, in which direction is heading now? Okay, yeah, do it fast and just let me know in the comments if you are able to understand this question. This is going to be the very easiest question ever. I'm going to read the question one more time for you. It's Raju is standing facing north. Raju is in the north direction. It means it's on the upside. Okay, he goes 30 meters ahead and turns to the right. So it turns to the left and goes for the 15 meter. Now he turns right and goes for the 50 meter and finally turns to his right and walks. In which direction is he heading now? Okay, the very easiest question ever. Okay, the very easiest question ever, guys. Getting my point? This is going to be the very easiest question ever.
Yes, guys. So we are back again. Done. Okay. So I'm gonna explain you this question. Okay. So just be with me. Question said Raju is standing facing north. Okay. So first of all, whenever you solve these kind of questions, now don't forget to draw this diagram so that you'll be never confused whenever you are solving the question. Okay. In which direction you are, where you need to go, everything will be clear in your mind. Okay. So look to the camera, to the board. Raju is standing facing north. Okay, Raju is standing facing north. He goes 30 meters ahead. Let's suppose he's here, moving to the upside and moving the 30 meter. Okay, he's moving 30 meter and turns left and go for the 15 meter. He's moving left and going for the 15 meter. Getting my point? Now he turns right and goes for the 50 meter. Okay, restructurize the diagram. 30 meter, 15 meter. Now they like he's going to the upside, right? He's going to the upside and going towards the 50 meter and finally turns to the right and walk. Finally turns to the right. ये right में गया बस walk कर रहा है, ये नहीं पता कितने मीटर गया. Now the question is asking in which direction he is heading now. In which direction he is heading now? Obviously he's heading to the east direction. He's heading to the east direction, guys. He's heading to the east direction. Okay. चलिए ठीक है फाइन ये हमारा क्लियर हो गया okay done okay so we are proceeding towards the next question look the next question is Manish walked 30 meters towards north okay Manish there is a boy named with the name Manish okay Manish walked Manish walked 30 meter okay Manish walked 30 meter okay Manish walked 30 meter towards north Manish walked 30 meter towards the north direction. Okay. Took a left turn and walked 40 meter. Took a left turn and walked 40 meter. Again, he took a left turn and walked 30 meter. Again, he took a left turn and walked 30 meter. Okay. How far and how far and in which direction he from starting point. Clear बच्चा पार्टी कमेंट करो बताओ south and 40 okay great south and 40 okay
से fast guys. South 40 south you said, okay? 40 and kilometer in south, okay? Fine. Let's see. East, west, north, south, okay? Manish walked 30 meters towards the north, okay? Manish walked 30 meters north, took a left turn and walked 40 meters. Took a left turn and walked 40 meters. Again, he took a left turn and walked 30 meters. How far and in which direction is he from the point, starting point? This is the starting point, SP. Okay, and the distance of all these is 40. Okay, it's become the 40 meter. And in the south 40 meter. बच्चा पार्टी देखना एक बार, साउथ 40 मीटर हमारा आंसर आया। क्या आया? साउथ 40 मीटर। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। यस, देखो मेरे बच्चे, एक चीज एक्सप्लेन करता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, रुक जाओ दोबारा से। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना एक बार। क्वेश्चन है हमारे पास में, मनीष वॉक्ड 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मनीष 30 मीटर गया, कहां पे? नॉर्थ में गया, ठीक है। टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 40 मीटर। टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 40 मीटर। अगेन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 30 मीटर, ठीक है। यानी हमारा यहां तक आ गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? क्वेश्चन ने क्या बोला कि कितनी तो दूरी पे है, तो वो तो हो गई हमारी 40 मीटर इसको देखते हुए, ठीक है। क्लियर है? कितनी तो दूरी पे है, और इसने क्या बोला है, दिस क्वेश्चन बेसिकली, ध्यान से सुनना मेरी बात, दिस क्वेश्चन डिमांड्स दैट इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है मेरे बच्चे? ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। समझ में आया मेरी बात? क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने ये जरूर बोला है कि वो यहां पे आया, यहां पे खत्म हो गया, इट्स ओवर हियर, ठीक है। बट इधर से वो अगर यहां देखेगा तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है? ऑब्वियसली ईस्ट आ रही है। क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली पूछा है हमारे से, ध्यान से सुनना। तो इसका जो आंसर है ना मेरे बच्चे, वो आपका साउथ नहीं होगा। मैंने भी गलती से बाय मिस्टेक कर दिया था, क्वेश्चन दोबारा पढ़ा है मैंने, ठीक है। साउथ नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा ना वो होगा 40 मीटर ईस्ट। क्या आंसर होगा मेरे बच्चे इसका? 40 मीटर ईस्ट इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे, ठीक है। क्लियर सारे बच्चों को?
40 मीटर ईस्ट इसका आंसर होगा बच्चे। चलिए प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ये वेरी गुड, मजे आ गए। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्या दे रहा है, क्या क्या चल रहा है हमारे पास में, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट है राजू वॉक्स 25 मीटर 25 किलोमीटर नॉर्थ। राजू, ये राजू नाम के लड़के बड़े बदमाश होते हैं, पता है आपको? मजाक कर रहा हूं, कोई सच मत ले लेना, कहीं किसी का नाम और नाराज हो जाए अभी कि सर आपने मेरे को बदमाश कैसे बोल दिया। राजू वॉक्स 25 किलोमीटर नॉर्थ एंड टर्न्स लेफ्ट। राजू वॉक 25 किलोमीटर नॉर्थ and turns left and moves 5 kilometer and moves 5 kilometer and moves 5 kilometer ahead and reach 20 and reaches point Q. Okay, he then turns right he then turns right and covers another 5 kilometer and covers another and covers another 5 kilometer. Afterward he turns to east. Afterward he turns to east. Afterward he turns to east and walk 5 kilometer. Afterward he turns to east and walk 5 kilometer. How much distance he has? How much distance he has? How much distance he has to travel? He has to travel to go back to go back to starting point. ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट करो इसको बच्चे, क्या आंसर आएगा इसका? डू इट फास्ट, जल्दी करो फटाफट से। ओके ग्रेट, लक्ष्य मिलने दिया 30। ओके लक्ष्य, डू इट फास्ट बच्चों। ओके
ग्रेट, चलिए ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक बार आपको, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए सारी चीजें। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? राजू वॉक्स 25 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। ओके, राजू वॉक्स 25 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। ओके, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मूव कर गए, अच्छी बात है। एंड रीचेस पॉइंट क्यू, इसका क्या नाम है? क्यू पॉइंट है। ओके, देन ही टर्न्स टू राइट एंड कवर्स अनदर डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। देन ही टर्न्स राइट एंड कवर्स अनदर डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। आफ्टरवर्ड ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। ईस्ट में घूम गया और 5 किलोमीटर और चलता है। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज टू ट्रेवल टू गो बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट? कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच सके? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? इट्स वेरी कॉमन, 5 तो ये, 25 ये, टोटल 30 किलोमीटर ही नीड्स टू ट्रेवल टू रीच टू द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर मेरे बच्चे? ठीक है, उत्कर्ष शर्मा 30 और 7 कैन बी। 7 कैसे हो सकते हैं मेरे बच्चे? उत्कर्ष मेरे को ये बताओ, 7 तो पॉसिबल ही नहीं है ना मेरे बच्चे। कैसे होगा? आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे क्या दे रखा हमारे पास के अंदर? हमारे पास के अंदर है वो यहाँ पे ऊपर पहुंच गया, ऊपर से वो नीचे आएगा 5 किलोमीटर, तो वो यही चल लिया। तो 25 इसको और ट्रेवल करना है, तो 30 किलोमीटर हो गया ना टोटल मेरे बच्चे। कहाँ पे हुआ बताओ? तो आपका आंसर 7 तो किसी भी एंगल में आ ही नहीं सकता, इट्स नॉट इवन पॉसिबल। ठीक है, ओके गाइस, सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो नेक्स्ट, देखना बच्चा पार्टी की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। शैली वॉक 4 किलोमीटर इन नॉर्थ। शैली, shall I walk 4 kilometer in north direction from a place, north direction from a place. Shall we walk 4 kilometer in north direction from a place? North direction from a place A. She turns to left and walk 3 kilometer. She turns to left. She turns to left and walk 3 kilometer. She turns to left and walk 3 kilometer. Okay. From that place, she moves straight. She moves straight to starting place. To starting place. क्लियर बच्चे? इसके बाद में क्या है? प्लेस ए। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द total distance covered? कमेंट करो भैया, बताओ मुझे। उत्कर्ष शर्मा पूछ रहे हैं, सर टुडे मोहन सर क्लास इज हियर। नो मेरे बच्चे, मोहन सर की क्लास हो चुकी है अभी, आज ही रहेगी 12। लक्ष्य मील का आंसर आ रहा है भैया, 12 आंसर है। ठीक है, ग्रेट।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए एक्सप्लेन करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, कैसे होगा क्या होगा। हाँ, शैली वॉक 4 किलोमीटर इन नॉर्थ। ओके, शैली है वो 4 किलोमीटर चलता है नॉर्थ के अंदर। क्लियर मेरे बच्चा पार्टी? शैली वॉक 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, शैली वॉक 4 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम अ प्लेस ए। ये इस प्लेस का क्या नाम है? ए प्लेस है, ठीक है। शी टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। She turns to left and walk 3 kilometer. Okay, from that place she moves straight to the starting place, यानी वो यहां से वो इधर चली गई डायरेक्ट, ठीक है। what is the total distance she covered? what is the total distance she covered? obviously हमें क्या लगाना है यहाँ पे? फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है? मुझे कोई कमेंट करके इतना बता दो उस फॉर्मूले का नेम क्या है। जो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले उस फॉर्मूले का क्या नेम है? कौन सा ऐसा बच्चा है, मैं जानना चाहूंगा जिसको पता है कि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है। एग्जैक्टली, पाइथागोरस। ठीक है, क्या लगाना है हमारे को? पाइथागोरस लगाना है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस सिंपल है, क्या करो हमारा 4 + 3 स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे यहाँ पे, बराबर है 16 + 9 अंडर रूट कर दो। कितना है भैया हमारे पास में? 25। 25 का अंडर रूट कितना हो गया? 5 किलोमीटर। यहाँ पे आ गया, इसको 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है। आंसर कितना हुआ? 4 + 3 + 5 कितना हो गया हमारे पास? 5 9 10 11 12 किलोमीटर। तो टोटल 12 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस शी नीड्स टू ट्रेवल। ओके, टोटल 12 kilometer distance she needs to travel in this. Is that clear everyone? Pythagoras, right? Exactly, Pythagoras is equal to Pythagoras, right मेरे बच्चे? तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। We'll again see you in the next class. Okay, हम कल मिलेंगे दोबारा से। आज के लिए इतना ही था एंड बस इतना ही था, और क्या है। ओके, तो कैसा लगा आप सारे बच्चों को? मुझे कमेंट करके ये बताओ आप सब बच्चे, मजा आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, वेरी गुड मेरे बच्चे। See you tomorrow. Okay. Anybody wants to ask? मजा आया ना? चलिए ठीक है, मजे मेरे को बहुत है, आप लोगों के साथ मजे मजे आते हैं क्या? राइट, मजे ऐसे कंटिन्यू आते रहने चाहिए, पता है आपको। बोलो क्या रिक्वेस्ट है आपके बच्चे, बताओ। आपकी रिक्वेस्ट जरूर पूरी की जाएगी, जरूर मुकम्मल करेंगे हम आपकी रिक्वेस्ट को। बताओ क्या रिक्वेस्ट है आपकी, कमेंट करो। अभी नहीं लेंगे, आज के लिए इतना काफी था। कल ट्राई करते हैं हम एक क्लास आपकी जो है वो और ले लेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। ये रिक्वेस्ट आपकी मुकम्मल नहीं हो पाएगी अभी। ओके, विल सी यू टुमारो। ओके, बाय एवरीवन। ऐसे खूब सारे हैं ना आप लोग, ऐसे खूब भेजा करो। देखो मैं भेज रहा हूँ जैसे अभी, ऐसे भेजा करो सारे बच्चे खूब सारे। इस वीडियो को शेयर किया करो। चलो बाय एवरीवन, टाटा बाय बाय।